Good evening, children. Today I am going to do the chapter The Salient Features of the Constitution. That's part 1. In the previous classes, we have studied about the topic single citizenship, universal adult franchise, and we are continuing with fundamental rights. Now, in this, we talked about single citizenship. What is this single citizenship? It means that all Indians, irrespective of the state of their domicile, are the citizens of India. After that, universal adult franchise. This means that all persons of 18 years of age and above have the right to vote irrespective of their caste, creed, color, religion, etc. Then we talked about the fundamental rights. There are the rights which are essential for the all-round development of a person. There are total 7 fundamental rights. The first one is right to equality. The second one is right to freedom. The third one is right against exploitation. Fourth one, the freedom of religion. The fifth one, cultural and educational rights. Sixth one, the right to constitutional remedies. And the seventh, right to education. Today we are going to start with the fundamental right against exploitation. Now, if I talk about right against exploitation, it is mentioned in Article 23 and 24. The Constitution lays down certain provisions which prohibits exploitation of individuals. This is the right against exploitation. Article 23 and 24 guarantee the right against exploitation, which upholds the dignity of people. Article 23, it prohibits all forms of forced labor and trafficking in human beings. Human trafficking means buying and selling human beings. For example, you would have heard this word human trafficking several times in newspaper or in the news. You have heard and read about this. It means that buying and selling human beings like commodity. Any violation of this right is a punishable offense. Article 24. Now let's move to Article 24. Article 24 declares that no child under the age of 14 years shall be employed in a factory or mine or any other hazardous environment. Bonded labor in any form have also been made illegal. Payment of less than minimum wages is also considered as forced labor. The government of India or the government of different states, they fixed the minimum wages. And wherever those people are working, the owner or the head of the institution, whichever place is there, that person is supposed to give the right amount, whatever is being denied or whatever is being levied by the government. My next point is right to freedom of religion. Now, what is this right to freedom of religion? As you all know, children, that in India we are having several kind of religions. भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं. So, right to freedom of religion is coming in article number 25 to 28. These articles come from the article number 25 to 28. It declares, Article 25 declares that all individuals have the freedom of conscience and the right. First point,
to profess, preach and propagate any religion of their choice. It means that हमें जो भी धर्म पसंद आता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, जो भी आपको रिलीजन धर्म पसंद आता है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू आर टोटली फ्री टू प्रैक्टिस विच एवर रिलीजन यू प्रेफर. On the other side, you are free to practice any religion, but you are not free to practice, or you are not free to convert yourself into other caste. आप अपना धर्म बदल सकते हैं, but you cannot change your religion. Next point, freedom to manage religious affairs. You are free, it's totally free. You can have your own association, your own group for any particular. For example, you would have heard the name of VHP, that stands for Vishwa Hindu Parishad. So these are religious boards, or they look after religion. Next point is freedom from payment of taxes for promotion of any particular religion. आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, अगर आप उसमें कुछ दान देना चाहें, आप उसमें कुछ पेमेंट करना चाहें, तो आप उसमें टोटली फ्री हैं. ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप किसी धर्म के लिए कुछ दान नहीं दे सकते, या फॉर यू इट्स डेवलपमेंट यू कैन नॉट प्रोफेस any kind of thing. So all the things are totally free. No religious instruction in institutions maintained by state fund. No religious instruction in institutions. कोई भी विद्यालय हो, any kind of school, any kind of organization, in that we are not supposed to give any kind of instructions related to any kind of religion. मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस धर्म में ये चीज़ है, आप इस धर्म को मत मानिए, आप इस धर्म में जाइए, या ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है. It's not the right of the people. You are not supposed to give, or no institution is supposed to maintain any such kind of comments. Next point is, the only restriction on this right is that nothing should be done to malign or incite reaction among the followers of other religion. आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने धर्म को फॉलो करिए, but you are having no right to say anything wrong against other religion. चाहे आप हिंदू धर्म हैं, चाहे इस्लाम, सिख या ईसाई, आप अपने धर्म को फॉलो करिए. आपके पास कोई हक नहीं है कि आप दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करें. माय नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. नाउ इन दिस आर्टिकल 29 and 30 are there. In this comes article 29 and article 30. Now firstly we should talk about article 29. What is this article 29? Article 29 provides that any section of people having a distinct language, script or culture shall have the right to conserve them. आप जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं, जिन भी किताबों को आप पढ़ते हैं, आपके पास पूरा हक है उनको कंजर्व करने का, उनको आप सेव करिए, सुरक्षित करिए. No person can be denied admission to any educational institution which is either maintained by the state or receives aid from the state on the grounds of religion, race, caste, etc. Simple meaning of this is that you belong to any caste or any religion. On the basis of your caste or on your religion, you cannot be denied admission. The school authorities cannot say you that you belong to this religion, your color is this, or you belong to this caste, that's why you are not being given admission in this institution. It is not the procedure. The only procedure can be there that there are no seats, or they can say that you are not able to qualify the written examinations, that's why you are not getting the admission here. They cannot deny you the admission on the basis of your religion or caste. Article 30 allows all linguistic and religious minorities
to establish and administer educational institutions of their choice. It also provides that while granting financial assistance, the state shall not discriminate against any educational institutions on the ground of their being managed by a minority committee. देखो, in Lucknow only you can see that we are having several kind of institutions. आपने लखनऊ में देखा होगा कई तरह के स्कूल्स हैं, कुछ मिशनरी स्कूल्स हैं, कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, CMS है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, CMS, LPS, so many schools are there. In these institutions, financial assistance is being provided. State जो है वो किसी भी तरह का, the state government cannot make any kind of discrimination against any educational institution. अगर वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप का है या जैसे स्टेट गवर्नमेंट किसी को फंडिंग कर रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, तो वो सभी को देगा. स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से सभी को स्टेट पैसा देता है. ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं देंगे, ये माइनॉरिटी का है या ये किसी दूसरी कास्ट का है. Now, after this, let's talk about right to constitutional remedies. The right to constitutional remedies means it is the most important right. Right to constitutional remedies is the most important right because this is the only right which helps in enforcing all other rights and prevents their infringements. Had this right been not there, the other rights would have been meaningless. देखो इसका मतलब क्या होता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब हम अपने संविधान में या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव कर सकते हैं. इसमें कई तरह के बदलाव हो सकते हैं. As it guarantees the rights of citizens to move the Supreme Court for the enforcement of the rights conferred upon them. This article also empowers the Supreme Court and the High Courts to issue writs or orders for the enforcement of any of the rights. It is the heart and soul of the Constitution because the right to constitutional remedies is the only right that guarantees against encroachment of any fundamental right. देखो इसका मतलब ये हुआ कि मानो सरकार है, वो किसी चीज पे हमारे रोक लगा देती है. It puts any kind of barriers on any kind of rights. या बार बार देश में कर्फ्यू लग जाता है हमारे राज्य में या हम लोग अपने एरिया में, we are not able to enjoy our fundamental rights. So in these conditions we can move to the judiciary. हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह की रुकावट आ रही है या कोई हमें हमारे मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने में बैरियर क्रिएट कर रहा है. तो आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव टोल्ड यू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. याद रखना, दिस इज आर्टिकल नंबर 32. Remember this point that this is article number 32 and it implies that, or it tells to us that if anybody is not allowing us to enjoy our fundamental rights, it guarantees, it is a kind of guarantee against encroachment of our fundamental rights. Or in short, if I say about this, this is the heart and soul. This is the heart and soul of the Constitution because the right to constitutional remedies is the only right that guarantee against encroachment of our fundamental rights. Let's move to the next point. My next point is right to education. Now the meaning of the word right to education is, now in which article it comes? It comes in article number 21A. The right to education bill was
passed by Indian Parliament on 4th August 2009. It was passed on 4th August 2009. It received presidential assent and was notified as law on 26th August 2009. 26 अगस्त 2009 को इसे एक लॉ बना दिया गया था, एक राइट बना दिया गया था एज द चिल्ड्रंस राइट. और ये राइट है क्या? इट इज द चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. द लॉ कम्स इनटू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया except the state of Jammu and Kashmir from April 1, 2010. It means कि देखो पहले जो हमारा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, पहले जो प्लेस जम्मू कश्मीर थी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अलग था, वहाँ की नियमावली पूरी अलग थी. बट पिछले इस साल से हमारा जो स्टेट है पिछले साल से ये फ्री हो गया है. नाउ दिस पर्टिकुलर लॉ इज नाउ एप्लीकेबल in Jammu and Kashmir also. Earlier it was not applicable. The act makes education a fundamental right of every child between the age of 6 and 14 years. मतलब जिन भी बच्चों की एज 6 साल से 14 साल के बीच में है, and specific certain minimum norms in elementary school. मतलब 6 से 14 साल का बच्चा सरकारी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा पा सकता है. I'm not talking about the private institutions. I'm talking about only the government institutions. This act also reserves, this particular act, right to education, also reserves 25% of seats for weaker sections even in private and minority schools. देखो यहाँ पे 25% मेंशन किया गया, but only few, I would say only rarest of the rare schools are there where this free education is provided to the weaker sections in the private institutions. Here it is written, government has made the law of 25%, but I would believe, or I would say that only minor or even rarest of the rare institutions would be there who would be providing free education to the weaker sections of the society. Now, let's talk about the term writs. I've told you about all the fundamental rights. Now, let's move to the other point, that is a writ. Now, what is a writ? रिट होता क्या है? सबसे पहले रिट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इन हिंदी वी कॉल दिस वर्ड एज याचिका. दिस वर्ड इज नोन बाय द नेम ऑफ याचिका. अब होता क्या है? Now what is the meaning of the word writ? In simple terms, if I say, it is an order which a court of law issues on a citizen's complaint in order to protect his her rights. मतलब एक ये आदेश होता है किसी भी कोर्ट का जिसके तहत हम लोग अपने, अगर किसी भी नागरिक ने अगर अपनी कंप्लेंट यहाँ पे करी है, if any citizen has made a complaint in order to protect his her rights. So total there are 5 writs. 5 तरह की रिट्स होती तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो केवल 5 तरह की है. There are total 5 kinds of writs what we have to study. Or in other language, if I say about writs, a writ is a legal instrument to enforce obedience to the order of a superior court. A court may issue a writ to compel an executive authority or a lower court to restore the liberty of an individual. These courts can issue writs of habeas corpus. और कौन कौन से हमारे writs होते हैं? Which are the 5 writs? The 5 writs are habeas corpus, mandamus,
prohibition, certiorari and quo warranto. ये तो हम लोग की 5 तरह की रिट्स होती है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट habeas corpus. Now, what is this habeas corpus? Habeas corpus होता क्या? Habeas corpus literally means you have the body. This word literally means to have the body. This means that if a person is wrongfully detained or illegally arrested, she will have to be produced before the court. A writ may be issued to the detainer to explain why she has detained the person. If the explanation is not satisfactory, the court may order that the detained person be set free. मतलब इसका ये हुआ कि मान लो पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या कोई किडनैप हो जाता है, एंड अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, देन पुलिस इज बाउंड टू गिव द रीजन. पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि हमने अगर इसको अरेस्ट किया है, इसको गिरफ्तार किया है, तो इस लॉ के तहत, इस जुर्म के तहत, इस कंडीशन में हमने इसको अरेस्ट किया है, एल्स नॉट. सो दिस इज द कंडीशन. यस, राइट आंसर गिवन बाय शुभी यादव. यू हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ द 5 रिट्स. नाउ ये हम लोग के ये है होता है हैबियस कॉर्पस पे. नाउ व्हाट इज दिस सेकंड वन, रिट ऑफ मैंडेमस. देखो जो मैंडेमस वर्ड है, इट इज अ kind of Latin word. Mandamus literally means we command. We command. This writ may be issued when a lower court or a public servant has failed to perform his her duty. अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो फेल हो जा रहा है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं कर पा रहा है, दिस रिट प्रोटेक्ट्स अ पिटिशनर. ये जो रिट होता है, जिसने भी याचिका दायर करी है, whosoever have filed the writ, it is a kind of protection to him. Or in other words, if I say that this is an order from an upper court to a lower court to stop the proceedings of the case. अगर कोई केस लोअर अदालत में चल रहा है, तो वो ऊपर का आदेश दे सकता है कि आप अपने काम को ढंग से करिए या इसको तेजी से करिए. This order can be given by a superior court to a lower court. The next point is writ of prohibition. This kind of writs, जो prohibition के writs होते हैं, such kind of writs are usually issued by a superior court. जो superior courts होते हैं या जो upper courts होते हैं, they issue to a lower court forbidding or prohibiting is to proceed with the case not within its jurisdiction. मतलब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि आपने केस को जहां तक किया है उसको वहीं पे रोक दीजिए, आगे की जो सुनवाई है या जो आगे का कार्य है, दिस वुड बी डन बाय द अपर कोर्ट. मतलब जो भी लोअर कोर्ट ने किया था उसको वहीं पे रोक के अपर कोर्ट उस केस को अपने पास ले लेता है. अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, केस का फैसला नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है. In the mid only, the upper court takes the case of the lower court. Now the fourth option is writ of quo warranto. Quo warranto क्या होता है? Quo warranto means by what order, किसके आदेश पे. When a person claims or usurps any office, she may be asked on what authority she has done so. If the reply is not satisfactory, a writ may be issued against the person, forbidding him/her from holding that position and compelling him/her to vacate the post. अच्छा, इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर बताऊं तो if I tell you in other words, it might be that it will be easier for you to understand. इसमें मतलब होता है इसका writ of quo warranto का,
जैसे एक केस कोई चल रहा है लोअर कोर्ट पे, वन केस इज गोइंग ऑन एंड वॉट एवर डिसीजन इज बीइंग, जो भी इसका डिसीजन था उस पे, उस चीज को सिर्फ डिसीजन पे रोक लगा दी गई है, डिसीजन रुक गया है और बाद में डिसीजन को डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, केस पे रोक लगा दी जाती है। केस मतलब लोअर कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में आ जाता है, फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू अ अपर कोर्ट। और क्यू वेरेंटो में क्या होता है, वॉट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन, डिसीजन पे रोक लगा दी जाती है, मतलब फैसला हो गया है लेकिन फैसले को पब्लिकली नहीं किया जाता है, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया जाता है। इफ यू डू रिमेंबर, राम मंदिर के टाइम में ये हुआ था, फैसला 3 दिन बाद आया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिट ऑफ सर्ट्यूरेरी। सर्ट्यूरेरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ what is going on. This writ is issued by a highest court to lower court, asking the lower court to send records of the proceedings of a particular case to the higher court so that it can deal with more effectively. Many times it happens कि जो lower courts हमारे होते हैं, lower courts are there, in that also the decisions are pending, वो केस अपर कोर्ट में चला जाता है। देखो सीधे शब्दों में अगर समझाऊं, इफ आई टेल यू अबाउट क्यू वेरेंटो, इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर। देखो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गवर्नमेंट डॉक्टर, you are a doctor in a government hospital, and on the same time, at the same time जो आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन की डिमांड होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप जो डॉक्टर हैं आप ही अपनी कंपनी का टेंडर उसमें डालते हैं एंड यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एट द सेम टाइम यू आर होल्डिंग 2 ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट। एक समय में या आप 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं या आप अपने पद का, यू आर मिस यूजिंग योर पोस्ट। In that conditions, quo warranto can be issued. Quo warranto जो है वो इशू किया जा सकता है। देखो जैसे एग्जांपल में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, ही इज एन एमपी ऑल्सो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, उनके पास कई सारी कमेटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको सैलरी, जो उनको सैलरी मिलती है वो सिर्फ एक पोस्ट की ही मिलती है। जो भी हाईएस्ट पोस्ट होती है उनको उसकी सैलरी मिल जाती है। इन द सेम मैनर जो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे जो देश का हमारे वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो राज्यसभा का हमारा मेंबर भी होता है, और लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो राज्यसभा के स्पीकर बन जाते हैं। अब सोचो, वाइस प्रेसिडेंट एक पोस्ट हो गई, एक पोस्ट इनकी हो गई स्पीकर वाली या चेयरमैन वाली। सो एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज होल्डिंग 2 ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इनको दोनों में से, मतलब एक चेयरमैन भी और एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, इनको लेकिन सैलरी जो होगी वो एक की ही मिलेगी। और वो किसकी मिलेगी? विच एवर पोस्ट इज द हाइएस्ट। जो भी हाईएस्ट पोस्ट होती है इनको सैलरी उसी की मिलेगी। देखो एक राइट जो था, वन पर्टिकुलर राइट वाज देयर विच वाज बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। वो कौन सा राइट था? दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको लिस्ट से हटा दिया गया था। एंड दिस राइट टू प्रॉपर्टी comes under the Article 31 of the Indian Constitution. पहले देखो इसमें क्या होता था, that the Indian citizens were having the right to purchase, hold and dispose of movable as well as immovable property as a fundamental right. मतलब आप जितनी चाहें उतनी जमीन खरीदे, जितना चाहें उतना बेचते जाएं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, सोशलिस्ट फिलॉसफी को देखते हुए इसमें चेंज किया गया था। एंड दिस चेंज वाज मेड in the year 1978 according to the 44th Amendment Act. This amendment made the right to property
आर्टिकल 300A, अ लीगल राइट। अगर आज आपके पास ज़्यादा ज़मीन निकल जाती है, अगर आप किसान नहीं हैं, आपके नाम पे 2-3 घर निकल जाते हैं या 4 प्लॉट निकल जाते हैं, देन अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन। तब आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। Okay, one child has asked me the question, sir, why it was removed? The cause for its removal was, if this have not been removed, then how the people, the common people, would have made their houses? Means in India or in Lucknow only, if you see, enough rich personalities are there, good businessmen, good capitalists are there. They are able to purchase, they are in a condition to purchase द एंटायर एरियाज। इतने पैसे से मजबूत लोग हैं जो कि पूरे का पूरा लखनऊ खरीद सकते हैं। अगर अंबानी ग्रुप चाहे तो वो पूरा भारत खरीदने का, भारत की ज़मीन खरीद सकता है। अगर इस तरह ओपन कर दिया जाए सभी के लिए, जो जितना चाहे उतना खरीदता जाए, तो क्या होगा, लोगों को रहने की जगह कम पड़ जाएगी, लोगों के रहने के लिए घर नहीं बन पाएंगे। और जो रिच पर्सनैलिटी है, the rich will become more richer and the poor will become poorer and poorer. And on the other side, the middle class, जो middle class होता है, that is in the worst condition. In India, maximum people come in the category of middle class. So that's why they are the biggest sufferers. देखो आज के टाइम में भी nowadays this during the period of epidemic, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो लेबर क्लास थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिल रहे हैं या उनको काम धाम अपना मिलता जा रहा है मनरेगा की तरह से, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास? जो मिडिल क्लास था उसका क्या हुआ? दे आर इन द बिगेस्ट लॉस। फॉर देम नो सच काइंड ऑफ सिचुएशंस हैव बीन प्रोवाइडेड। इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम योर वाइट मनी, अगर आप अपने सही पैसे से खरीद रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज वॉट एवर यू आर परचेजिंग अकॉर्डिंग टू द राइट, दिस थिंग्स आर नॉट कंपल्सरी। मीन्स आपके पास एक घर हो सकता है, 2 घर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप ही के नाम पे यू आर द इंडिविजुअल एंड ऑन योर नेम ओनली 10-15 हाउसेज आर देयर। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग, जिनके पास वाइट मनी है, दोज आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, तो वो उनके घर में मान लो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के नाम पे वो एक एक घर खरीद लेते हैं। दैट थिंग इज पॉसिबल, बट हैविंग 3-4 प्लॉट्स ऑन द सेम नेम इज डिफिकल्ट नाउ डेज, एंड इफ एनी पर्सन इज फाउंड इन दैट मैनर, then a legal action can be taken against that, और that person will have to prove, उस इंसान को वो प्रूव करना पड़ेगा कि इतनी प्रॉपर्टी उसने खरीदी कैसे, जो उसने 4 प्लॉट या 4 घर खरीदे हैं वो कहाँ से खरीदे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, 50,000 हो गए, साल भर का आपका 6 लाख हुआ, आपको आपने 10 साल नौकरी करी है तो आपके पास 60 लाख हो गया। तो दिस थिंग इज पॉसिबल, बट अगर आपने घर खरीद लिए हैं 5-5 करोड़ वाले, या आपने 1-1 करोड़ के घर खरीद लिए हैं, तो हाउ विल यू बी एबल टू शो कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से? ठीक है, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन राउंड पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन राउंड। My first question is, see the first question, children. These are the important questions. The first question is, name the right that was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment. ऐसा कौन सा राइट था जो हटाया गया था according to the 44th Amendment? Now children, start sending your answers.
Name the right that was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act. Yes, Ridhima Singh, good. Where are the other people? Only Ridhima has sent the answer. Okay, other children? Okay, Charu has sent the answer. Other also send your answers. Annav Anand, Shubhi, Aditi, Sakshi Bajpai. Send your answer. Okay, Annav. Okay, you all have sent your answers. That's good. All the people have sent their answers. The answer is correct. And the correct answer for this is right to property was deleted from the list of fundamental rights. Okay, now let's see the other question. Why did the Constitution abolish the old system of conferring titles? Send the answer for this. Again, I am repeating. Why did the Constitution abolish the old system of conferring titles? Okay, it appears to that no one is knowing the answer. Let me tell you the answer. The Constitution has abolished the system of conferring titles because they were against the policy of equality of status. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो टाइटल्स पहले यूज़ किए जाते थे उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि ये लोगों में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था जैसे लोगों बराबर ना हो. इट वॉज अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. It was appearing that some by the name only, if I write a particular kind of title you are using before your name, for example Khan, particular name title, ya Kuwar, so it creates a kind of inequality. So that's why for the maintenance of equality of status this particular thing was deleted. Now the next question, what is meant by preventive detention? Yes children, send the meaning of this. What is meant by preventive detention?
Anna, Shubhi, Charu, Aditi. Send your answer, children. Okay, children. The answer for this question is Preventive Detention Act is the detention of a person without trial. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो. कोई खतरा है या कुछ गलत हो सकता है, उससे पहले ही हम, उस इवेंट के होने से पहले ही हम उस इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं और बिना किसी ट्रायल के का मतलब बिना किसी कोर्ट या उसके ऑर्डर के. दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mention one right of a person detained under a preventive detention act. Mention one right of a person under a preventive detention act. Just answer this question fast, all the talented ones. Riddhima, Aditi, Arnav, Shubhi. Janvi Yadav, Sakshi Bajpai. Where are you people? Give your answer. Okay, people have sent TADA, prevention from arrest. Now, what's the answer for this question? The question is, mention one right of a person detained under the Preventive Detention Act. The answer for this question is, no one can be detained for a period longer than 3 months. Means the police cannot keep you in custody for more than 3 months. The period can be extended only by an advisory board. Means if the advisory board says that the punishment should be increased under the PDA, that is Preventive Detention Act, then only the punishment can be extended only by the permission of the advisory board. It's not in the hands of the police department. Now the next question and the last question for today.
Mention one important provision of the right against exploitation. Mention one important provision of the right against exploitation. Yes, children, send your answer. Yes, Aditi, Arnav, send your answer. Shubhi, Charu. Okay, now I'm going to tell you the answer for this question. The answer for this question is no child below the age of 14 years. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine. He is not permitted. आप 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी जगह काम नहीं करा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में. दैट इज चाइल्ड लेबर. ओके, सो हम लोग के कुछ टॉपिक्स इसमें बच रहे हैं. दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. जो हम लोग के टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. Only our topic left is about checking the arbitrary actions and the fundamental duties, which we will be doing in the next class. Hopefully, these topics would be clear to you. So children, for today, this much only.